Hello everyone. I hope आप लोग अच्छे हो and you people are practicing problems, learning concepts. In this video, we are going to solve this question. And before you navigate to this solution video, I would suggest, rather strongly recommend you to do this question before. Okay. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद से ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, and then try calculating it. Try it for at least half an hour. Then only, if you're not getting the answer, then only you navigate through the solution video. Also, even if you're getting the answer, in order to embolden your concept, you can go through the solution video. But yeah, before solving this question, अगर आप वीडियो के थ्रू जाते हो, you won't be learning anything, I would say. Okay, चलो क्वेश्चन को देखते हैं. A point object O is placed in front of a plane mirror AB of length 2 meter. The line AOM makes an angle 60 degree. So you can spot here one inclined mirror which is making an angle of 60 degree with the line AOM. Now there is one observer. So one person walks along the straight line this. So there is one person walking on this path. Given that OA is equal to 1 meter. So this is AO 1 meter and this is AM 2D and this is given as 90 degree here. Okay, so this is 2 meter and also length of mirror is given as 2 meter. Now find the total length of observer's path along XM X dash over which the image of object O is visible in the mirror. So we have to find out up to what distance this person will be able to see the image of this object O in the mirror. So image को देख पाने का मतलब क्या है? Light getting reflected from the mirror will reach to person's eye. किसी भी चीज को आप कब देख पाते हो? When light reflected from that particular object is able, I mean, light reflected is able to reach to your eyes. Then only you are able to see that thing. सो फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे हमें निकालना है, टेक्निकल टर्म है इसका. दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू. सो फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक देख पाता है उसके लिए आप मिरर के कॉर्नर पॉइंट से रिफ्लेक्शन करवाते हो. जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख लो, सपोज कर लो छोटा सा ऐसा मिरर है. मिरर का साइज हमेशा पर्सन से छोटा होगा. सो दिस इज मिरर and there is one object here. Okay, so this is the object. Now there is one path here and upon this path there is one person walking. अगेन हमें ये चेक करना है कि कितने डिस्टेंस तक वो इस ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकता है. सो यहाँ से सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस बना लो. डन है. सो प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द मिडल ऑफ द मिरर, बाइसेक्टिंग द मिरर. इफ इट डजंट सीम लाइक तो आप मिरर के लेंथ को थोड़ा बढ़ा लें. सो यहाँ से अगर आप रिफ्लेक्ट करवाते हो इट विल रीच समवेयर हियर. ओके, सो आई मीन यू विल सी it is intersecting this line somewhere here. Okay, this reflected light. So if observer is here, this reflected light is reaching to the eye of observer. So this person will be able to find out that this light is coming somewhere from here and that will be image of this object. Image थोड़ा wrong दिख रहा है क्योंकि object distance image distance से बराबर होता है. Anyway, I just want to make you understand. Okay, so this will be like this. Now अगर मैं reflection यहाँ से करवाऊँ, not at the edge. तो यहाँ से अगर light reflect करता है, it will bisect this, I mean, it will intersect this line somewhere here. So if observer is here, that this person will be, and if observer is here, then also the person is able to see the image of this object in the mirror. लेकिन मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकता है? यहाँ तक, इस साइड, राइट. इसके बाद तो रिफ्लेक्टेड लाइट इधर की तरफ पहुंच नहीं रही क्योंकि मिरर का एज है ये, इसके ऊपर मिरर है नहीं. सो लाइट विल रिफ्लेक्ट एंड रीच टू दिस पॉइंट. ओके, सो ये पॉइंट, वन पॉइंट मान लो, वन के बियॉन्ड जब वो जाता है then the person won't be able to spot the image of object O in the mirror. Okay. Now इस साइड कितने डिस्टेंस तक देख सकता है उसके लिए भी आप इसके मिरर को थोड़ा बड़ा कर लो. यहाँ तक, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी एंड देन इट विल रीच टू दिस पॉइंट. ओके, सो यहाँ तक, आई मीन जब वो इधर था तो वो इमेज को नहीं देख सकता बिकॉज रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर इज नॉट रीचिंग इन दिस स्पेस. डन है. It is starting to intersect this line from here and up to this point it is intersecting. Let us call it point 2. So between 1 and 2, the person will be able to see the image of object in the mirror. So this will be the field of view. So इसको आप क्या बुलाओगे? इस लाइन को डिस्टेंस बोलोगे, उतने डिस्टेंस तक वो देख सकता है. And this region is called field of view. Okay. So here also we need to check for reflection happening from the corner ends. Corner ends तुम्हारा क्या है? A and B. सो ए पर देखो लाइट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे आप नॉर्मल बना लो. सो लाइट आफ्टर नॉर्मल थोड़ा सा और ऐसे बनाते
सो यहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे इंटरसेक्ट किया। सो यहाँ तक देख सकता है, इसके नीचे जो रास्ता है उधर ये विजिबल नहीं होगा, इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन द मिरर। एंड इस पॉइंट पे आप लाइट को फॉल करवाओ। अगेन ज्योमेट्रिकली वी नीड टू चेक कि ओ से जो लाइट बी पे फॉल कर रहा है वो वर्टिकली होगा या फिर सर्टेन एंगल बनाएगा, है ना। क्योंकि देखो, वर्टिकली ऐसे रैंडमली लेना सही नहीं होगा, इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, ऐसे ऐसे भी दिख रहा है। सो इट डजंट लुक लाइक कंप्लीटली वर्टिकल है। यहाँ पे आप नॉर्मल बनाओगे देन इट विल इंटरसेक्ट समवेयर हियर। So this point 1 and 2, distance between 1 and 2 is the distance up to which this person can see the object image in the mirror. Okay. So first of all, we need to figure out कि ये वाला line, ये वाला ray of light कैसा है geometrically. So देखो, ये है हमारा mirror, ये है corner point, यहाँ से आप vertical एक line बना लो। तो अगर यहाँ पे object होता है, then we will say that okay, light coming from this object striking the this corner end will be vertical light. Okay, so ray of light will be vertical in that case. Let us check. This is 60 and this is 2. Let us say this is x. So x by 2 is cos 60, that is half. So this is this, x is equal to 1 meter. So yeah, अगर x 1 meter है, यहाँ पे है क्या, हाँ, this is d, right? So d is equal to 1 meter. So yeah, this is 1 meter. And if this is 1 meter, you will say that light coming from here striking this corner end is vertical, like this. So चलो सबसे पहले इस पॉइंट पे लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं कुछ ऐसा, it will strike somewhere here. Okay. Then you will look for what? Look for the bottom end. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट करवाओ, it will reach here, and that you can see, I mean field of view will be, or distance up to which the person can see image will be this one. अब इसको आप ज्योमेट्रिकली निकाल लो। तो देखो, सबसे पहले मैं इस डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करती हूँ। इसको m1 ले लो और इसको m2 लो। ओके, तो m1 तुम्हारा कितना होगा? दिस इज योर हाउ मच? दिस इज योर 2d, दैट इज 2 मीटर। एंड दिस एंगल कैन बी स्पॉट, देखो ये है तुम्हारा 60, राइट? एंड दिस डॉटेड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, सो दिस होल इज 90. So 90 minus 60, 30. So this angle is 30 and this angle is 30. So whole is 60 degree. Okay. And this is your 2D, which is equal to 2 meter. So let us say M1 divided by 2D will be equal to how much? That will be tan 60. Okay. So this is this thing. And M1 will be equal to how much? This is 2D, 2 meter, 2 root 3. Okay. So 2 root 3 meter. This is 2 root 3 meter. चलो, अब इसको स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, ये कितना होने वाला है। तो सबसे पहले यहां से आप ऐसे लाइन बना, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी दिस लेंथ। ये वाला लेंथ कितना होने वाला है? आई मीन विच वन? यू कैन सी हियर दिस वन। ओके, सो दिस लेंथ वी कैन क्लियरली कैलकुलेट फ्रॉम दिस ट्राइंगल। यहां से आप कैलकुलेट कर लो। लेट अस से दिस इज y. सो y by 2, बिकॉज दिस इज 2 मीटर, राइट? So y by 2 will be equal to how much? Sine of 60. So that is root 3 by 2. So y is equal to root 3. So this thing is your root 3. Now left is this one. ये कितना होने वाला है तुम्हारा? So again let us calculate it. I mean this thing is going to be how much? Let us check for this one. I mean, this angle will be how much? This is vertical, right? This is your vertical line and this is perpendicular. So this is horizontal and this is this mirror. इसके बीच का angle 60 है. This angle is going to be how much? This angle is going to be 60. So this angle is also going to be 60. Now how much this will be making with the horizontal? So perpendicular to this with the horizontal will make how much angle? ये आप क्लियरली यहाँ से स्पॉट कर सकते हो। जैसे दिस इज हॉरिजेंटल लाइन, राइट? एंड हॉरिजेंटल लाइन मिरर से कितना एंगल बना रहा है? 60. सो हॉरिजेंटल लाइन मिरर से परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाएगा? सो मिरर से, मिरर कितना बना रहा है? मिरर को अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज मेकिंग 60, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस विल बी 30, राइट? So this is perpendicular, this is horizontal. So this angle has to be 30 degree. So this angle is 30 degree because this complete is 60, right? So this is 30 degree. अब आप इस easily इसको निकाल लो, इसको आप y dash मान लो. So y dash by this distance. This distance is equal to how much? This is d. This complete is 2d. So this is d, right? So y dash by I'm writing here. This is y dash by d. And y dash by d is equal to tan 30. So 1 by root 3.
and y dash will be d by root 3, that is 1 by root 3. So what will be the total distance? This is 1 by root 3 and this is your 2 root 3. So you will be writing here 2 root 3 plus root 3 plus 1 by root 3. So this will become 3 root 3 plus 1 by root 3. So this is your 10 by root 3 meter. So this will be your answer. Okay. There is one such question that I am giving you as homework. So I want you to solve this question. Okay. आप इसको solve करो. Tomorrow I will be uploading its solution. Okay. So I hope that field of view concept is clear, and I'm completely sure that you will be applying concept in order to get the answer in this case, and you will be getting. I know that. Okay. So yeah, but still, if you have any doubt anyway, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.